sexual harassment of women at workplace, the source of it in India was Bhavri Devi's case. Bhavri Devi was working in Rajasthan. She was working in the child development wing of the women's cell, and she had gone to stop a child marriage. 4-5 months kind of children. After a month or so, the wedding still took place. It was stopped only for a day. She was raped in a field by the 5 men, from the children's family, so on and so forth. Her case went unheard. Then few NGOs got together. They named this whole thing Vishakha, and then Vishakha guidelines came. On the basis of the Vishakha guideline, POSH Act was made. So what happens is, it works for organized as well as for unorganized sector. There are 4-5 areas where you can actually go and get your redressal. पहला होता है नेशनल वुमेन कमीशन. आप उनके पास ऑनलाइन कंप्लेंट डालते हैं और आपकी जो कंप्लेंट है वो, सपोज आप हरियाणा में रहती है, तो हरियाणा वुमेन कमीशन के पास आपके लिए वो लेटर वो वाया नेशनल वुमेन कमीशन पहुंच जाएगा. हरियाणा वुमेन कमीशन जो है वो डायरेक्ट करती है जो आपका नियरेस्ट थाना होता है, पुलिस स्टेशन होता है, वहां आप पुलिस स्टेशन में जाके डायरेक्ट भी आप कंप्लेंट लॉन्च कर सकते हैं. तीसरी जगह जो है वो है प्रोटेक्शन ऑफिसर. आप प्रोटेक्शन ऑफिसर के पास जा सकते हैं, और एनजीओज होती है जिनको सर्विस प्रोवाइडर्स की कैटेगरी में डाला जाता है, आप उनके पास भी जा सकते हैं. उनको राइट जो है वो सिर्फ इतना है कि वो आपको काउंसलिंग और सेटलमेंट के लिए एनकरेज कर सकते हैं, और बाकी ये आपका डिसीजन होता है कि उसके बाद आपको कोर्ट्स में प्रोसीड करना है कि नहीं. एंड यू कैन ऑल्सो गो एंड फाइल अ कंप्लेंट अंडर प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट. So you can also go and file that complaint with the JMFC, and you can proceed in the courts directly. As soon as you go to the courts, there are 2 orders which you should get immediately within a period of 3 days. आमूमन मिल जाना चाहिए आपको, अगर आपका लॉयर ठीक है. तो उसमें पहला ऑर्डर जो होता है वो ये है, जो people who made the law, they understood one thing, that this woman who is suffering from domestic violence, her first need is shelter. So the first order which you get is that you will not be displaced from your shared accommodation. The second need of the person who is going through, the aggrieved woman, this act is only made for women. So the aggrieved woman, the second need of aggrieved woman is that yahan tak jo hua so hua. अब इसके आगे उसके ऊपर domestic violence नहीं हो सकता. So the second order which you will get along with the first one, it's in the same order, it's a part of the same order, that no further act of domestic violence will be inflicted upon the aggrieved women. Any kind of sexually colored remarks, कोई आपको छेड़ता है, कोई आपको वीडियो दिखाता है, कोई आपको ऑडियो सुनाता है, या कोई आपके साथ बहुत करीब आकर के बैठता है, आप अनकंफर्टेबल फील करती है, कोई आपको ल्यूट ईमेल्स भेजता है, व्हाट्सएप मैसेजेस भेजता है, या अगर आप ट्रांजिट पे हैं, आप टूर पे गए हुए हैं, आपके साथ एयरक्राफ्ट में कोई छेड़खानी होती है, ये सारी चीजें जो है आपके वर्क प्लेस सेक्सुअल हरासमेंट के अंदर आती हैं. इसका रिड्रेसल सिस्टम जो है वो फेयरली इजी है. There has to be an internal complaints committee. The first thing is, the woman, if she feels sexually violated, she can actually go and complain to the internal complaints committee, and the internal complaint committee then take the cognizance of the whole offense. There is, in a very decent and in a very dignified way, the whole thing is, the whole inquiry is conducted, so that the dignity of a woman is not, tarnished more than it has already, because she has taken the courage to go and speak up to the internal complaints committee. अगर इंटरनल कंप्लेंट कमेटी को उनकी फाइंडिंग्स में ये लगता है कि हाँ ये सच है, जो दूसरी पार्टी है उसको भी सुना जाता है, देयर इज अ काइंड ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन, वो भी वहां होता है, और अगर उनको ये लगता है कि हाँ यहाँ पे एक सेक्सुअल वायलेंस हुआ है और ये ग्रीवियस नेचर का है, तो उसके बाद वो एम्प्लॉयर से कहते हैं कि अब आप इस वुमन की हेल्प करिए, so that she can go to the police and lodge an FIR on the basis of our complaint and the kind of evidence we have collected under section 354A. Domestic Violence Act basically contains certain abuses. Most of the time what happens is a woman think कि ये तो होता ही रहता है, ये मेरे साथ हो रहा है, मेरे फ्रेंड के साथ भी हो ही रहा होगा, nobody speaks about it, women are so much closeted. So this is one act which takes into consideration every possible violence or abuse which can happen towards a woman in a matrimonial home
or in any shared accommodation where she has lived either before or after her marriage. And what are those abuses? If somebody is verbally abusing you, what does that mean? Gali galoch to is very easy to understand. It is a verbal abuse, but also letting you down, also insulting you. Are aap kya kar pao? You cannot do this. Things like that. Physical abuse, which I'm not going into. Mental abuse and emotional abuse. That I'll come back to later. Financial abuse. The money is not being given to you to actually even meet your day to day basic expenditure. Being a woman, you do have certain basic needs. You have to go to the salon, you have to fill your gas, you have to go out and live a simple, decent life. Whatever is the standard of your matrimonial home, the people who are living in your matrimonial home, that becomes your financial status as well. So you are not being given money, and you are actually begging money from the so-called head of the family, and it starts feeling very insulting and traumatizing over a period of time. Now, this is one act, which is the only act I would say, which also considers sexual violence. Now, sexual violence we all understand is, if you are being forced into a sexual act. See, maternity laws are also like extremely advantageous for a woman who is a working woman. 1961 में ये लॉस बने थे और 56 ईयर्स बाद 2017 में इनको थोड़े बहुत अमेंडमेंट किए गए कंसिडरिंग कि अभी जो करंट सिचुएशन है women are adopting, women are वो सरोगेसी में भी जा रही हैं. सो बेसिकली मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट में ये होता है कि आपको एक पेड छुट्टी मिलती है 26 वीक्स की, और अगर आप अडॉप्ट करते हैं या आप सरोगेसी के थ्रू आप अपने चाइल्ड को लेते हैं तो आपको 12 वीक्स की मिलती है. अगर आपको कोई मेडिकल कॉम्प्लिकेशन होता है या आपको ट्यूबेक्टोमी होती है या कोई और रीजन मिसकैरेज या वो होता है उसमें आपको 6 वीक्स की पेड लीव मिलती है. एंड देन व्हेन दिस सेक्शन 11A व्हिच हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड इन 2017 that a woman who has just given birth to a baby and has just joined back after a leave is complete, then in that case, if an organization is having more than 50 employees, उनके पास एक crash होना चाहिए, and the woman should be allowed to go to the crash 4 times to feed the baby. If she is extremely exhausted and is going through postpartum depression and things like that, then she should be given rest periods. उसका जो appraisal है वो नहीं किया जाना चाहिए. Or so because her performance definitely is going to decline during this period, and if she can work from home she should be given that option. Most of the big companies are actually pretty good at it now. They're even giving paternity benefits. So this is broadly about the maternity things. Again, it's the employer's duty, like in sexual harassment of at the POSH Act, they have to put up a place where the details about maternity benefits are kept. Otherwise, during the contract signing also, you can speak about it. But there is one thing, that the woman should be working in this particular company for at least 2.5 months. It's not like you come and within 10 days you ask for, or within 2 weeks you ask for maternity benefit. So I think it is a fantastic act. कभी-कभी होता क्या है ना कि वैल्यू इतनी कम होती है that we try to say, okay, छोड़ो इसको, मतलब रिकवर करने का कॉस्ट will be like more than the actual cost of thing. एंड वो छोड़ो के एटीट्यूड से कि ये जो सेलर्स होते हैं, जो वेंडर्स होते हैं, दे एंड अप मेकिंग सो मच प्रॉफिट बाय सेलिंग सब स्टैंडर्ड थिंग्स. 3 साल पहले इनफैक्ट आपका पूरा कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ को अमेंड किया है गवर्नमेंट ने टू अंडरस्टैंड कि नाउ द परचेजिंग एक्टिविटीज दैट पीपल आर डूइंग इज नॉट जस्ट कन्वेंशनल रिटेल स्टोर्स, आप ऑनलाइन भी इतना चीजें लेते हो एक्सेट्रा. उन सबको कंसिडर करके पूरा लॉ अमेंड किया गया है. समथिंग इन द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट विच वी कॉल एज डेफिशिएंसी ऑफ सर्विस. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू एस्टैब्लिश कि क्या सर्विस या क्या प्रोडक्ट आपने दिया था और उसमें क्या डेफिशिएंट है. नाउ लेट्स प्रिज्यूम, गिविंग यू अ वेरी लाइव एग्जांपल, कि मैंने एक एज रचना जी से एक बैग ऑर्डर किया. सो इट कुड बी व्हेन द बैग केम, इट केम ऑफ अ डिफरेंट कलर. मे बी आई वांटेड समथिंग इन टैन कलर और वो आया ब्लैक कलर का. That is not deficiency in service. That is something that you can go back, get it exchanged, or get a refund against it if they don't have any stock available, or if you're not able to get the product. That is not deficiency of service. Deficiency of service आपका एक्टिवेट तब होता है कि जब आपने जो चीज मांगी, या तो आपको ओरिजिनल की जगह उन्होंने फेक उठा के दे दी, या कोई डैमेज चीज दे दी आपको, defective दे दिया. Maybe you ordered for an iPhone and what we see generally on social media, you got a box of bricks. Maybe आपको अंदर रिन की टिकिया डाल के दे दी है. This is deficiency of services.
फ्लाइट में कितने लोगों को कितने बुरे एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं आजकल. दीज आर ऑल डेफिशिएंसी ऑफ सर्विस बिकॉज इट इज देयर ड्यूटी to give you a good service from the point you take on to you get on to the plane and to the time your destination. If there is a deficiency of service during that transit, you should go to a consumer court. So I would actually agree with the makers of the law that the percentage of women who are getting battered inside their own home is much, much higher. 1 in 3 women goes through physical violence, not physical, sorry, domestic violence, intimate partner abuse. 1 in 3. That's a huge. If 15 girls are sitting, then out of them, you can imagine 5 of them have gone through.